Hello everyone, welcome back to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and this is 8th of October 2022. We are going to analyze the Hindu newspaper for today. तो आज हम हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज करने जा रहे हैं. आज है 8 अक्टूबर 2022 और हम आज का न्यूज़पेपर जो एनालाइज करेंगे एडिटोरियल्स भी कवर करेंगे इसी एनालिसिस में. सो टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स वी आर गोइंग टू कवर एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट संडे इज ऑफ. ओके, संडे को यू हैव टू स्टडी द न्यूज़पेपर योरसेल्फ. संडे का न्यूज़पेपर आपको खुद से पढ़ना होता है. संडे ऑफ रहता है, इसलिए संडे को कोई एनालिसिस नहीं होगा. ओके, सेल्फ स्टडी डे. All right. So the first article on page number 1 is panel to study SC status of Dalits post conversion. So there is a commission which is going to examine the matter in line with the presidential orders which is issued under Article 341 of the Constitution. What is Article 341 of the Constitution? देखो, this is again important for prelims. Article 341 says that the president, with respect to any state or union territory, he may, where it is a state, after consultation with the governor, by public notification, specify the caste, race or tribes or parts or groups within the caste, race or tribes to be deemed as scheduled caste. Okay, तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 का यूज करके गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करके स्पेसिफाई कर सकता है कि ये पर्टिकुलर कास्ट या ट्राइब या रेस इस पर्टिकुलर स्टेट में स्केड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में आती है. ओके, दैट इज आर्टिकल 341. Alright, so Article 341 says President, after doing thorough consultation with the governor, he can specify that this particular caste, race, or tribe falls under the scheduled caste list in a particular state. Okay, so there has been a commission which is now examining this matter in line with Article 341. So Center has appointed 3-member commission. Center ने एक 3-member commission appoint किया है, wherein the head of that commission would be Chief Justice, former Chief Justice of India, K.G. Balakrishnan. And this particular commission, what is the role of this commission? To consider the possibility of granting the scheduled caste status to new persons who have historically belonged to the scheduled caste, but then they got converted to other religions like other than the Hinduism, Buddhism and Sikhism. Hinduism, Buddhism, Sikhism के अलावा किसी religion में पहले वो scheduled caste थे, बाद में उन्होंने conversion कर लिया, तो इस केस में उनका जो पॉसिबिलिटी है कि वही फिर से उनको ऐसी स्टेटस दिया जा सकता है या नहीं, उस पॉसिबिलिटी को स्टडी करने के लिए इस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया है. ऑलराइट, and the commission will have to submit its report to the ministry in 2 years. तो हर 2 साल में कमीशन को इस रिपोर्ट को सबमिट करना होगा मिनिस्ट्री को. Now the question is why or how were the Sikhs and Buddhists included? देखो, there was this कालेलकर पैनल रिपोर्ट 1955 की थी ये रिपोर्ट. This is again important for pre and paper 2. Kalelkar panel report and high powered panel report, these were the two reports. They were the basis for amending the order to include Dalit Sikhs and Dalit Buddhists as scheduled caste in 1956 and 1990. तो 1956 और 1990 में दलित सिख्स को और दलित बुद्धिस्ट को स्केड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में ऐड करने की बात की गई थी इन दो रिपोर्ट्स के अंदर, इसीलिए सिख्स एंड बुद्धिस्ट आर आल्सो इंक्लूडेड. And there is a 1950 का law which provides for only those belonging to Hindu, Sikh or Buddhist communities to be categorized as scheduled caste. So that is why this commission has been established. कि 1950 के रिपोर्ट के हिसाब से तो सिख्स और हिंदू और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के अगर लोग हैं वही scheduled caste की लिस्ट में कैटेगराइज किए जा सकते हैं. तो अगर मान लीजिए उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है, अब वो वापस से स्केड्यूल कास्ट की लिस्ट में आना चाहते हैं, तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, ये कमीशन का डिसीजन रहेगा. ऑलराइट, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950, दिस वाज द ऑर्डर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, ये 1950 का ऑर्डर है. इट स्टिपुलेट्स दैट नो पर्सन प्रोफेसिंग अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म कैन बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट. एंड द ओरिजिनल ऑर्डर अंडर विच ओनली हिंदूज वर क्लासिफाइड, इट वाज लेटर अमेंडेड. तो पहले सिर्फ हिंदूज इस ऑर्डर में थे कि ओनली दोज हु आर बिलोंगिंग टू दिस रिलीजन हिंदुइज्म they can be categorized in the list of scheduled caste, but then Sikhs and Buddhists were also added. Okay, coming on to the next important article, this is really important for prelims ka exam. Nobel Peace Prize 2022 has been awarded to the human rights advocate Ales Bialyatsky from Belarus and Russian Human Rights Organization Memorial and Ukrainian Human Rights Organization Center for Civil Liberties. तो इनको ये पीस प्राइज क्यों दिया गया है? Because they are promoting, right to criticize power and protect the fundamental rights of citizens. Why? Because the war is going on, Russia-Ukraine war हो रहा है, and citizens' rights have been violated. Citizens' rights are at stake,
right? Their life is at stake. Plus, who is criticizing this kind of war in Ukraine or in Russia, they are also being abused, tortured. So in that case, these organizations and Ales Bialysky, he is fighting for the rights of the people, and they are documenting the war crimes, human rights abuses in amidst this war. So they demonstrate very important part of civil society, and they are fighting for peace and democracy. That is why they have been awarded with this Nobel Prize. Okay, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं. यहाँ पर ये आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है. इसका प्लीज टेक आउट अ क्लिपिंग एंड अटैच इट टू योर करंट अफेयर्स का रजिस्टर. Coming on to the editorial for today, Indian society based editorial are relevant for paper 1 and paper 2 both. The trophy of the new Buddhist movement in India. Now first let us understand what is the meaning of the word atrophy. Atrophy का मतलब क्या होता है? It means gradually decline in the effectiveness ड्यू टू निग्लेक्ट और अंडर यूज. जब किसी की इफेक्टिवनेस धीरे धीरे खत्म होने लगती है उसको हम अट्रोफी बोलते हैं. दैट इज नोन एज अट्रोफी. So here they are talking about the atrophy of new Buddhist movement. Okay. Now what is new Buddhism? Let us understand that. So Dr. B.R. Ambedkar na, he embraced Buddhism. So Dr. B.R. Ambedkar na, he embraced Buddhism on 14th October 1956. That is why this article has come. अभी 14th October आने वाला है, तो Dr. B.R. Ambedkar ने इसी दिन बुद्धिज्म को embrace किया था. He had this feeling that Buddhism basically emancipates people from difference from community based differentiation. तो ये जो बाकी religions में थोड़ा बहुत भी caste based community based differentiation होता है ना, उससे ऊपर उठाता है बुद्धिज्म लोगों को. So he and his followers who embraced Buddhism are known as neo-Buddhist. Okay, so Ambedkar ji, he believed Buddhism is rooted in India's civilization. It is in the ethical values, the moral values of Indians. It is rooted in Indian civilization. Okay, and it is against any kind of patriarchal domination, because Buddha, his message was very clear, right? That see everyone is, see yourself in everyone. That was the basic message of Buddha. Buddha यही बोलते थे कि अपने आप को सभी में देखो. That promotes equality. That stops domination of any kind, whether it is community based or gender based. Neo-Buddhism is the mass movement that would help better the lives of untouchables, because see, untouchables, why they are called as untouchables? Because people still have this kind of differentiation based on the work we do, based on the gender we have, etc. That is why they categorize some people as touchables and some as untouchables. Why? Because that there is a fault in their mindset कि भाई ये बंदा अनटचेबल है क्योंकि इस तरीके का काम करता है. अगर हम बुद्धिज्म की नजर से देखें तो कोई अनटचेबल नहीं है. हम अपने आप को सभी में देखें अगर, तो कोई हमसे अलग नहीं है. अगर कोई हमसे अलग नहीं है तो कोई अनटचेबल कैसे हो गया? So to achieve dignity and self-respect in these communities, Neo-Buddhism became a mass movement. It also provided strong psychological support, because see, Buddhism helps you mentally also. It helps you to grow mentally as well. If you are facing any kind of challenge, whether it's mental challenge or financial challenge or any kind of challenge, Buddhism basically breaks the attachment. Buddhism basically lifts your mind up. Buddhism lifts your spirits up. Buddhism makes you realize that you are the part of that supreme, that universe. You are, basically Buddha, he used to see himself in the leaves also. पत्ते में भी अपने आप को देखते थे बुद्धा. So basically he was saying that we are the nature and nature is in us. So that helps you to lift your spirits mentally, morally, etc. Okay. Now, what are the problems of New Buddhism? Why they are saying the atrophy of New Buddhist movement in India? When New Buddhist movement हो रहा है, तो ये भी अच्छे से समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा कहा गया है अट्रोफी के बारे में. All right. So problems of New Buddhism. At present, Buddhist population in country is one of the smallest among minorities. This is the basic fact that we all know. ये तो हम सबको पता है कि Buddhist population हमारे nation में minority में आता है अभी. 80% of Indian Buddhists reside only in the state of Maharashtra. There are some few states, for example, you can see states like Maharashtra and the nearby areas. वहाँ पर आप कुछ communities देखोगे, the Matang community, the Maratha communities, who call themselves as a Neo Buddhist. Okay, तो यहाँ पर थोड़ी सी सोशली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं जो अभी भी अपने आप को हिंदू कास्ट में देखती हैं. बाकी थोड़ी सी मतांग कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, राइट, मराठा कम्युनिटीज के भी काफी लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिस्ट मानते हैं. एंड 80% जितनी भी माइनॉरिटी है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन की, 80% सिर्फ महाराष्ट्र में है. ओके, सो बिकॉज ऑफ द
downfall in the Buddhist population, the Neo Buddhism's effectiveness is also going down, because भाई देखो population में downfall है, तो जो effectiveness है at large, जो एक mass movement था, वो भी नीचे जा रहा है. Conversion to Buddhism even among Dalits is not looked at as a suitable means to achieve social emancipation. Still, देखो अभी in our country what's happening, even the Dalits, if they get converted to Buddhism, people judge other people on the basis of the work they had done in the past also. वही पास्ट में आपने क्या किया, उस बेसिस पे भी लोग आपको जज करते हैं यहाँ पर. तो इसीलिए दलित अगर बुद्धिज्म में कन्वर्ट भी कर रहे हैं ना, स्टिल सोशल इमेंसिपेशन नहीं अचीव कर पा रहे हैं. Dalits in the states of UP, Bihar, Tamil Nadu, Karnataka, Punjab, West Bengal and Odisha, they have not shown interest in adopting Buddhism, because even after adopting Buddhism, they are not, achieving dignity and equality, right, in the society. These are the issues why Neo-Buddhism is basically becoming non-effective right now. Okay, so that is the entire article all about. Coming on to the next important editorial, where the stars must not twinkle. So here now there are different observatories which have been mentioned in this article. This article is very, very important for prelims and paper 3. Department of Science and Tech announced establishment of country's first dark reserve in Ladakh. तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर प्री, ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो गया. पहला डार्क रिजर्व लद्दाख में स्टैब्लिश करने की बात की गई थी, अभी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा भी था. तो व्हाट आर दी स्पेस ऑब्जर्वेटरीज? ये स्पेस ऑब्जर्वेटरीज ना होते क्या है ये समझ लेते हैं. Space observatories help astronomers identify the stars and various cosmic phenomena like supernova and nebulae. And these supernova and nebulae na, they are a million light years away from Earth. तो एस्ट्रोनॉमर्स को ना स्टार्स आइडेंटिफाई करने में, कॉस्मिक फिनोमेना जो भी कॉस्मिक इंसिडेंसेस हो रहे हैं उनको स्टडी करने के लिए स्पेस ऑब्जर्वेटरीज की जरूरत होती है. एंड द लोकेशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेटरीज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, right? Based on the radiation, based on the light outside, based on the cloudiness, the monsoon, the weather of a particular space of a particular place, the observatories are constructed. So to make sure that the astronomers can detect even the faintest of the stars and their radiation. And cosmic radiations are easily absorbed by water vapor, and hence telescopes must be placed at the observatories. Cosmic radiation, basically इसको water vapors के द्वारा भी absorb कर लिया जाता है, इसीलिए observatories में आप देखोगे telescope होते हैं बड़े बड़े, right? तो यहाँ पर we are going to study some of these observatories. This is really important for your prelims. Vainu Bapu Observatory, which is in Tamil Nadu. Please remember the location. Location याद रखना बहुत जरूरी है. ये इंडिया का foremost observatory है जो कि IIA ने establish किया था, Indian Institute of Astrophysics. The astronomers led by R. Rajmohan discovered an asteroid that was named 4130 Ramanujam with the help of a telescope which was placed in Vainu Bapu Observatory. Then we have the Hanle Space Observatory. It is also located at Hanle, which is near the Changtang Wildlife Sanctuary in Ladakh. So this is again important. Where is the Changtang Wildlife Sanctuary located? Ladakh में located है. ये भी बहुत promising observatory है. हानले एक छोटा सा गांव है, ठीक है. And this observatory is placed on the highest peak in Dikpa Ratsari called Mount Saraswati. That you have to remember. Then we have the Dark Sky Reserve. Dark Sky Reserve is a public or private land with a distinguished nocturnal environment, and this was in news last month. ये सितंबर के मंथ में काफी न्यूज में था. So again this is important for prelims. यहाँ पर जो डार्क स्काई रिजर्व है एक प्राइवेट लैंड है, पब्लिक प्राइवेट लैंड है, ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस हैज स्टारी नाइट्स दैट हैव बीन डेवलप्ड रिस्पांसिबली टू प्रिवेंट लाइट पोल्यूशन. किसी भी तरीके का लाइट इफेक्ट यहाँ पर नहीं आता है, बिल्कुल अंधेरा. The key objective to establish this reserve is to promote astronomy tourism in an environment friendly manner. Okay, and to protect the nocturnal species. जो आपके रात की species होती है ना, उनको protect करने के लिए, जो darkness में hunt करती है, अंधेरे में hunt करती है, उनको protect करने के लिए भी इस reserve को establish किया गया है. So this was all for today. I hope you enjoyed this lecture. उम्मीद करती हूँ आज का lecture आपको